Hi, my name is Ritika, and in today's video, we'll talk about another basic topic of chemistry important for numericals and for the understanding of other higher topics is dilutions. Okay, so just imagine that we're having this cup of coffee, which I am actually having right now, but this is very bitter for my taste. बहुत बहुत कड़वी है. Okay, so the solution to this either could be I just stop drinking it and throw it away, which I'm not going to do. Second solution could be I could manually try to take my coffee molecules out of my cup, but वो भी possible नहीं है ना, right? Third thing I can simply do is जो सब लोग करेंगे logically is to add more milk to it to dilute it and then it will be easy for me to drink क्योंकि तब इतना bitter नहीं लगेगा, ठीक है? So मैंने बहुत simple चीज़ की I just added more milk. जितना कॉफी था उतना ही कॉफी इसमें रहा मैंने बस मिल्क और ऐड कर दिया सो दैट क्वांटिटी तो बढ़ गई बट इट इज नाउ डाइल्यूट. So exactly वही है that is what dilution is. We are not actually going to take out the moles of something. We're just going to spread the moles out and that is what is dilutions. ठीक है. So we already know the formula for molarity. Molarity क्या होता है? Molarity is number of moles, okay, divided by the volume of solution, okay, in liters. That is the meaning of molarity. ठीक है. And basically important चीज ये है कि number of moles बिफोर डाइल्यूशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन क्योंकि हमने कॉफी के मॉलिक्यूल्स तो बाहर नहीं निकाले ना वो तो पहले जितने थे अभी भी उतने ही है राइट. हमने सिर्फ पानी ऐड कर दिया तो वॉल्यूम जो पहले था वो वॉल्यूम अब नहीं होगा टोटल सोल्यूशन का वो चेंज हो गया होगा बिकॉज हमने पानी ऐड कर दिया है या इन केस इन दिस केस मिल्क ऐड कर दिया था but number of moles of whatever solute we're talking about that should remain the same. ठीक है. So just trying to do a basic maths here. Number of moles क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से molarity multiplied by volume हो जाएगा. ठीक है. So if I just try to explain this to you, number of moles m1 v1 which is number of moles before of the solute before my dilution should be equal to number of moles after my dilution and this is the basic formula जो हम हर जगह use करेंगे and that is it. ठीक है. So I think understanding हो गई है. दो तीन question practice कर लेते हैं and then we'll call it a day. So let me just give you one of the first questions. You can pause the video and try, but I'll just solve in a jiffy so that you don't get late. Okay, so the question is that 20 ml of 2 molar HCl is diluted. Okay, आपने इसको dilute कर दिया to 100 ml. Okay, which means final solution की volume है 100 ml. ठीक है. Now we have to find the molarity, final molarity. तो आई थिंक जो भी मैंने बोला एग्जैक्टली इसको अप्लाई करना है. वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज n1 v1 एंड व्हाट इज n2 v2 एंड दैट्स डन फॉर अस. ठीक है. तो 20 ml ऑफ 2 मोलर तो पहले हमारा पास 20 ml क्या है. दिस इज माय वॉल्यूम 1 ऑफ 2 मोलर इज मोलारिटी 1 इज 2 मोलर. ओके एंड डाइल्यूटेड टू 100 ml तो मेरा वॉल्यूम 2 इज गिवन टू मी एज 100 ml. ओके and molarity 2 is something which I have to find out. Very simple. 20 into 2 equals to 100 into x, right? Because molarity m2 is unknown, we can find it out as x. यहाँ पे we don't have to convert ml into liters because क्यों ही करेंगे हम compare क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास units cancel out हो जाएंगे, right? So this is going to give us my x or my molarity equal to 0.4 molar if you solve it out. ठीक है. So again very simple. इसमें कुछ ज़्यादा rocket science नहीं है. Just need to understand one basic thing कि number of moles before the dilution should be equal to number of moles after dilution. यही same formula आप normality केस में भी use कर सकते हो because normality is nothing but molarity into n factor. मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी. ठीक है. क्योंकि अगर हम सेम सोल्यूट की बात करेंगे ऑब्वियसली अगर लेट्स से द एन फैक्टर इन एनी केसेस लेट्स से 2. ठीक है. तो इनिशियली भी 2 होगा फाइनली भी 2 होगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ऑन बोथ साइड्स राइट. सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड एज n1 v1 equals to n2 v2 also. So I hope this is clear. If you have any more doubts you can ask it below but I think that should be pretty much it for understanding.